Hello friend and family, this is me Sam Grover, and if you don't know who I am a college student and a vlogger on YouTube studying computer science here in India and will be sooner or later going to Canada for my later studies. Basically अभी कॉलेज की छुट्टियां हैं और कोई काम नहीं था व्लॉगिंग के अलावा, तो सोचा एक न्यू हॉबी बना लूं। और रीडिंग का मुझे कोई शौक नहीं था, पर क्या हो अगर आपको कोई बुक एक बार पढ़ने पर काफ़ी पसंद आ जाए एंड आपको वो राइटर की कहानी अच्छी लगने लगे। सबसे बढ़िया कि आप उन कहानियों को अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएँ। यही मेरे साथ हुआ एंड जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ वो है शो योर वर्क 10 ways to share your creativity and get discovered बाय ऑस्टिन क्लियन। काफ़ी अच्छा टाइटल है, लेकिन बुक उससे भी अच्छी है और मैं यहाँ पर आपका काम आसान करने के लिए आया हूँ। मैं बात करूँगा यहाँ पे इस बुक की समरी की। सबसे पहले आपको एक छोटा सा कंटेक्स्ट के तरीके से बता दूं कि ये बुक 10 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है एंड बेसिकली ये बुक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। एंड जिस ऑथर ने ये लिखी है उनकी टोटल 3 बुक्स अवेलेबल हैं और उनकी PDF लिंक्स या फिर किंडल की लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। Chapter number 1, a new way of operating. Author says कि creativity is not a talent, it is a way of operating. अब बचपन से creativity को as a talent लेकर पैदा नहीं होते, वो आप खुद बनाते हो। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि भाई how do I get noticed and how can I find my audience and how did the author did it, तो इसका जवाब है कि be so good that people can't ignore you। बस अगर मैं अच्छा हो जाऊं तो चलेगा। ऑथर कहते हैं कि अच्छा होने के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है एंड इट मीन्स कि शेयरिंग को अपना रूटीन बना लो जिससे आप ऑडियंस को गेन कर पाओ। एंड उसके बाद ऑथर अपनी बुक का रेफरेंस देते हैं कि आप अगर प्रोसेस देखना चाहते हो कि हाउ टू अट्रैक्ट पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट, तो वो उनकी पहली बुक में है विच इज स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट एंड उसकी भी वीडियो मैं जल्द ही बनाने की कोशिश करूँगा। फिर ऑथर इस बात को ख़त्म करते हुए कहते हैं कि all you have to do to get noticed is to share your work and to share your work you don't have to be genius। एकदम से कोई आइडिया क्लिक नहीं करता, आपको अपने दोस्तों से मिलना पड़ेगा, ट्विटर पर अपने ऑडियंस से बातें करनी पड़ेंगी which results into a collaborative idea। Therefore creativity is always a collaboration। And the next point is to stop asking what people can do for you and start doing what you can do for people। It's simple। मैं आपके लिए informative वीडियो बना रहा हूँ and I am adding value to your life and आप किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो by sharing this video to others and that's how you get noticed। ऑथर कहते हैं कि don't be terrified to call yourself an amateur। It's great that you are one because amateurs are enthusiastic। Sometimes वो किसी प्रोसेस को गलत तरीके से कर कोई न्यू डिस्कवरीज क्रिएट कर देते हैं and amateurs are not afraid to make mistakes in public because all knows कि वो amateurs हैं and amateurs knows कि contributing something is better than contributing nothing। So share something you love and people who love same thing will find you। फिर उधर कहते हैं कि to get noticed use your voice because if you want to get famous you should have a value like a brand and different brands have their own unique। Therefore talk about things you love and therefore you will come to know about your voice and don't afraid to try new things। If you think you are going to die, this will make you feel like you have less time for yourself to be recognized। Therefore author says कि if you have this idea in your mind कि you are about to die, then you will not waste time and just do your work to find and create your audience। Hence comes to chapter 2, think about process not the product। जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसके पीछे मेहनत लगी है, स्क्रिप्टिंग लगी है, एडिटिंग लगी है, तो अगर आप अपने रोल मॉडल को देखो तो सिर्फ उसे ऊपर से नहीं, उसे डीपली स्टडी करो। ऑथर से इसकी डोंट कॉपी द प्रोडक्ट, कॉपी द प्रोसेस एंड मेक योर ओन प्रोडक्ट। ऑथर कहते हैं कि रिव्यूअर के लिए प्रोडक्ट मैटर करता है एंड क्रिएटर के लिए द थिंग विच मैटर्स इज द प्रोसेस। एंड अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो प्रोसेस को सीखो
एंड प्रोडक्ट क्रिएट करो एंड उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से आप अपनी वॉइस को पहचान जाओगे एंड हेंस यू विल क्रिएट एन ऑडियंस. ऑथर सेज कि डोंट लेट योर ऑडियंस डाउन. दे टू वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर क्रिएशन एंड ट्राई टू इंडल्ज योर ऑडियंस इन योर वर्क एज मच एज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल बाय डूइंग Q&As ऑन YouTube. इसके बाद ऑथर आपको आपकी खूबियों के बारे में बताते हैं कि जो प्रोसेस आज आप कर रहे हो क्या पता उस चीज़ में लोग इंटरेस्टेड हों. सो प्रेजेंट योर वर्क टू दैम बट इन अ राइट मैनर. सो अगर आप अपनी क्रिएशंस को शेयर करते हो या नहीं भी करते, इट एक्ट्स लाइक एन डॉक्यूमेंट्री फॉर योर सेल्फ. देयरफॉर वी कम टू चैप्टर नंबर 3. This is a quote कि put yourself and your work out there every day and you will start meeting some amazing people. Here Austin talks about the consistency by saying overnight success is a myth. He says कि people are not interested in कि आपने स्कूल लाइफ में क्या किया या कॉलेज लाइफ में आप क्या कर रहे हो. They are more interested in कि आपने लास्ट वीकेंड पे क्या किया और कैसे किया. And author says कि अगर by chance if you can't find a way to excel in one type of genre, then feel free to leave it and find a good use of a platform by trying new things. And if you're not happen to stick with the work but you want to be consistent, then ask yourself what you are working on. This will find time for your work and you can find the time for your creativity if you look for it. And the author says here कि don't let the sharing of your work take more time than actually doing it. So set a timer of 30 minutes for sharing your stuff and then get back to work to create new stuff. Austin says कि don't put your work online if you are not ready to share it with someone. The act of sharing is kind, but don't post your unpolished content. If you are tired, then continue with it after a long break so that you can decide कि you have to post it or not. If you work on something a little bit every day, you end up with something that's massive. और तो ये भी कहते हैं कि if you want to be recognized and be different among people, go register yourself somewhere. You can create a domain name, or in my case I created a YouTube channel. It may or may not make you money, but it is like a documentary which I talked about earlier. Hence we comes to chapter number 4, which is open your cabinet of curiosity. Don't be a hoarder. Create your personality. And don't sit idle and wait for opportunity. We all have something interesting in ourselves. So get to know about your taste and be curious to know more about it and create. ऑथर कहते हैं कि अपने टेस्ट से डरो मत. अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो डोंट बी अफ्रेड टू शेयर इट विद अदर्स. मोरओवर इट्स द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद पीपल हु लाइक द सेम थिंग. ऑथर इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि अगर आप किसी के वर्क को शेयर करते हो, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ प्रॉपर क्रेडिट एंड डोंट नेग्लेक्ट द एट्रीब्यूशन की फ्रॉम वेयर यू फाउंड द वर्क. एंड क्या हो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई सॉन्ग यूज़ करना चाहते हैं बट यू डोंट हैव प्रॉपर क्रेडिट फॉर इट एंड नो इन्फो की हु मेड इट, देन इट्स सिंपल टू डिसाइड कि डोंट शेयर इट इफ़ यू कांट फाइंड द प्रॉपर क्रेडिट. देन कम्स टू चैप्टर नंबर 5, टेल गुड स्टोरीज. वर्ड्स डोंट स्पीक फॉर itself. लाइक अगर मैं आपके सामने 4 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दूं और उनके नीचे कुछ भी ना लिखूं तो आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा ट्रायंगल क्या चीज़ डिनोट कर रहा है, अनटिल मैं उसके नीचे कैप्शन ना डाल दूं कि ये वाला ट्रायंगल इस चीज़ के लिए है एंड बाकी सब इस चीज़ के लिए. देयरफॉर words matter. If you want to be more effective when sharing your work, you need to become a good storyteller. And storytelling is सबसे important as the structure of the story. To fit our life in a story, you have to crop, edit to make it in a good structure. Continue करके author कहते हैं कि a good pitch is the setup in 3 acts. First is the past, second is the present, and the third is the future. And वो कहते हैं कि always keep your audience in mind. And to make a great story, you have to study some great stories. Good stories बनाना सीखने के बाद अब आपको इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए. एंड ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास ऑक्यूपेशन है then it's good for you to introduce.
बट बीइंग एन आर्टिस्ट आपको एक अच्छा इंट्रो करना आना होगा. You can't just say कि I am a vlogger because this is a good chance कि सामने वाला पूछे कि have you vlogged something on YouTube? How many subscribers do you have? Which can make you in an awkward situation. जिसे हैंडल करने के लिए ऑथर कहते हैं कि treat them like an opportunity for yourself to generate audience and connect with somebody. So give a short and sweet answer or a two-line explanation कि what you are. Like I'm a vlogger and I do vlogging twice a week. इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के अंदर ऑथर कहते हैं कि teach what you know. The moment you learn something, turn around and teach it to others. This may seem suspicious कि क्यों? ऑथर इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझाते हैं कि एक शेफ़ एक रेस्टोरेंट के अंदर अपने जूनियर्स को खाना बनाना सिखाते हैं कि हाउ ही क्रिएट्स द फूड विच इज़ लाइक बाय एवरीबडी. बट उन्हें पता है कि इस परफेक्ट फूड को बनाने के लिए उन्हें 10 साल की प्रैक्टिस भी लगी है. तो जो जूनियर शेफ़ है वो खाना तो अच्छा बना पाएंगे बट शेफ से बेटर नहीं. Therefore make people better at something they want to be. Teaching people doesn't subtract value from you, it actually adds to you. Chapter number 7. Don't turn into human spam. ऑथर से इसकी कम्युनिटी इतनी अजीब है कि जो पीपल जिस न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल छपवाना चाहते हैं वो खुद उस न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते. तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ बोलो मत, सुनो भी. लिसन टू द ऑडियंस, टेक केयर ऑफ योर ऑडियंस एंड बी समवन्स ऑडियंस. इफ यू वांट सम फैन देन बी अ फैन फर्स्ट एंड यू हैव टू बी द गुड सिटीजन ऑफ योर कम्युनिटी फर्स्ट. ऑस्टिन सेज कि स्टॉप वरिंग अबाउट कि हाउ मेनी पीपल फॉलोज यू ऑनलाइन एंड स्टार्ट वरिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ पीपल दैट फॉलोज यू. इफ यू वांट फॉलोअर्स then be someone worth following. फेमस होने के लिए कुछ अच्छे कनेक्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं. You have to be good in what you do. Now let's talk about vampire test. This will help you to find the quality of people in your life. People जिनसे मिलने के बाद आप energetic हो जाते हो, they are good. And जिनसे मिलने के बाद आप exhaust feel करते हो, they are vampires. And what you have to do is to stay away from vampires. And the left one are the quality people. Quality people में से भी कुछ नकल बॉलर्स होते हैं. अब वो कौन है? वो कुछ ऐसे quality peoples हैं जो आपके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं and जो आपसे कुछ नहीं छुपाते. They are good and you have to maintain a good relationship with them and do regular meetups with them. And author कहते हैं कि regular meetup with friends are good to stay connected with people. एंड अब आपको अपनी ऑडियंस को क्रिएट करना आ गया. देन हाउ टू डील विद बैड कमेंट्स. इसलिए चैप्टर नंबर 8 वी विल लर्न टू टेक द पंच. When you put your work out in the world, you have to get ready for the good, the bad and the worst. Then how to get ready for the bad things? See, कोई भी क्रिएटर बैड रिव्यूज से नहीं मरता. Take a deep breath and get ready for accepting whatever comes to you. Just keep moving because you can't control the reviews you get, but the thing which you can control is how you react about them. And what if somebody trolled you and about you and says bad about your work? Use the block button on social media and delete button on YouTube to delete nasty comments. Throw them into trash. Because this teaches you how to get ready for bad. And then chapter number 9, Sellout. हिंदी में बोलें तो बिक गया. क्रिएटर फ्री में कोई भी काम क्रिएट नहीं करना चाहते. Everyone has to generate some revenue from work. And the author says कि लोग पहले आर्टिस्ट को मनी बनाने के लिए कहते हैं एंड जब वो मनी बनाने लगते हैं तब देन लोग उनका साथ नहीं देते. कहते हैं कि ये आर्टिस्ट बिक चुका है. Therefore ऑस्टिन हम सबको यही सजेस्ट करते हैं कि डोंट बी जेलस व्हेन पीपल यू लाइक डू वेल. सेलिब्रेट देयर विक्ट्री एज इफ इट्स योर ओन. अब आपने अपने ऑडियंस को गैदर कर लिया है, अब उन्हें आप कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट कर, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप. सिंपली आस्क फॉर डोनेशंस ऑन योर वेबसाइट बाय एडिंग अ हैंडल बाय मी अ कॉफ़ी. बिकॉज इससे दो काम होंगे. पहला, पीपल विल थ्रो सम रुपीज़ and second, you will get to know about the audience that how much they value you.
बिकॉज पीपल हु सब्सक्राइब यू इज़ द लिस्ट ऑफ योर सपोर्टर्स। बट जब बात वॉलेट से पैसे निकालने की आती है, ऑथर कहते हैं कि तब यू मीट सम ऑफ योर बिगेस्ट सपोर्टर्स, देयरफॉर डोंट बिट्रे देयर ट्रस्ट। वॉल्ट डिज्नी ने कहा है कि हम मूवीज़ पैसे बनाने के लिए नहीं बनाते, हम पैसे बनाते हैं आगे मूवीज़ बनाने के लिए। इसका मतलब है कि इन्वेस्ट मोर एंड मेक मोर वर्क फॉर योर सेल्फ। टेक एडवांटेजेस ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटीज दैट कम्स योर वे, ट्राई न्यू थिंग्स and then sell your work. You have to be kind as much as you can, but selfish enough to get your work done. After this we come to our final chapter, जिसके अंदर ऑथर कहते हैं कि कभी भी अपने काम को बीच में लीव मत करो। किसी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग डिपेंड करती है कि आप स्टोरी को कहाँ ख़त्म करते हो। एंड द स्टोरी बट डोंट क्विट द शो, because work is never finished, only abandoned. Therefore just keep going. हम सबको पता है कि हमारा पुराना काम हमारे नए काम के लिए कुछ नहीं कर सकता। Therefore the success and the failure rate depends on the work or the effort you put on your work. Just analyze कि what you missed in your last work, what mistakes you did, what you can add up more. Deal with these questions and make your new project better than the last one. And then what about the breaks? You should take the break, but the planned ones. And the next is how to plan the break. So there are three prime spots in our day to take a break and turn off our brains from connecting lives. First one, a moving train, a subway car, or while traveling. Just stare out of the window, relax. It usually happens twice a day to separate our work life from our home life. Second is exercise. Using our body relaxes our mind, and when mind is relaxed, you comes up with the new thoughts. And the third one is nature. Go out to the park, take a hike, go outside in fresh air and disconnect from everything and every electronic. And what if you learned whatever you had to learn from the thing you are doing? Then it's time to change the course and find something new to learn. Get rid of old materials, and जब आप ये करोगे तो आपके पास new material की जगह होगी। तो दोबारा से करने का नहीं, नया करने का सोच। Become an amateur and document your process and share it while you go on. इसी के साथ ये बुक खत्म होती है, बट ऑथर आपसे पूछते हैं कि what's next, and then he writes this. एंड मैंने इसके जवाब में ये दिया। मैं YouTube के साथ साथ Instagram, Snapchat, Twitter पर एक्टिव हूँ। हैंडल आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको प्रोसेस बिहाइंड ब्लॉगिंग वाला ब्लॉग देखना हो तो आपको वहाँ कॉर्नर के अंदर दिख जाएगा। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो देखनी हो तो वो आपको नीचे दिख जाएगी। एंड रेस्ट यू नो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एंड गेट नोटिस्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।